Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my next video lecture. Today we will study the structure and function of cell membrane, cytoskeleton, cytoplasm, nucleus, and ribosomes. First, what is cell membrane? Cell membrane or plasma membrane is a thin elastic covering which covers the cytoplasm, and it is present in both prokaryotes and eukaryotes. If we talk about the composition of plasma membrane, that it is composed of proteins and lipids, but some quantities of carbohydrates as well. और डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है, तो थोड़ा सा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है. एंड व्हाट इज़ द मेजर फंक्शन? That semi-permeable function. What is semi-permeable function? That it means that it only allows a certain molecules to pass through uh, it, which are required by cell. तो ये सारे मॉलिक्यूल्स को पास होने से रोक देता है, सिर्फ सेलेक्ट करके कुछ मॉलिक्यूल्स जिनको उसी टाइम सेल को नीड होती है उन्हीं को ये छोड़ देता है, जिसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल फंक्शन. जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू व्यू किया गया, तो उस दौरान एक स्पेसिफिक टाइप की स्पेशल टाइप की एक स्ट्रक्चर नज़र आई है, जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर्स. जिस तरह आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ऊपर एक पिंक कलर में आपको एक लेयर नज़र आ रही है, नीचे एक पिंक कलर में लेयर नज़र आ रही है, उसके साथ जो है उनके टेल लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं. ये पूरा मिला के बाई लेयर हम कहते हैं, ऊपर एक लेयर और नीचे एक लेयर. और उन लेयर्स के बीच में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो एम्बेडेड है, इसलिए कहा जाता है कि लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड. And these lipid bilayer, what is the function? The function of lipid bilayer is that it provides fluidity as well as elasticity to membrane. क्योंकि membrane की ये nature होती है कि elastic nature होती है और fluidity भी होती है इसकी. तो both these is due to presence of lipid bilayer. Here you can see the plant cell, जहाँ पे आपको सेंट्रल वैक्यूल नज़र आ रहा है और उसके साथ न्यूक्लियस को इसने एक साइड पे पुश किया हुआ है. और उसके अलावा आप लाइसोसोम्स देख रहे हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंड यू कैन आल्सो सी द राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट. This is animal cell where you can easily observe the vacuoles, mitochondria, cell membrane, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, nucleus. What is cytoskeleton? साइटोस्केलेटन सेल के अंदर माइक्रोफिलामेंट्स एंड मैक्रोफिलामेंट्स पे कंसिस्ट होता है. दोनों को मिला के हम साइटोस्केलेटन कहते हैं. व्हाट आर माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स? माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं एंड दे यूज्ड बाय सेल टू होल्ड देयर शेप. क्योंकि सेल को भी होल्ड करना होता है, तो इसके लिए स्पेसिफिकली एक तरह से होल्डिंग के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स चाहिए. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर tubular structures which are made up of tubulin and they are used to hold the cell shape. And microfilaments are also thinner and they are made up of actin protein. और इनका फंक्शन क्या है? दे हेल्प टू चेंज देयर शेप. सेल की जो शेप चेंज हो रही होती है उसमें ये हेल्प कर रहे होते हैं. What is cytoplasm? Cytoplasm is the semi-viscous and semi-transparent substance which is covered by plasma membrane. Plasma membrane ने जो भी हिस्सा कवर किया होता है सेल का, वो सारा साइटोप्लाज्म कहलाता है. एंड इट कंटेन organic molecules like carbohydrates, lipids, proteins, and also some inorganic salts. They may be completely or partially dissolved.
And what is the major function? The major function of cytoplasm is that it provides space for proper functioning of organelles like glycolysis, protein synthesis, etc. What are organelles? These are the small structures that are specialized to perform specific type of function. Just like nucleus, जिसका एक specific function है. Here you can see the nucleus is bounded by double membrane which is known as nuclear envelope. जो double membrane से एक structure cover होती है उसको हम nucleus कहते हैं. And all the space that is covered by nucleus is granular fluid that is known as nucleoplasm. जिस तरह plasma membrane जिस एरिया को कवर करता है वो सारा स्पेस हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर जितना भी स्पेस है जो कि न्यूक्लियर इन्वेलप कवर करता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. And nucleoplasm consists of two major parts. One is nucleolus. You can see in diagram nucleolus, and another is the area where chromosomes are present. अब nucleolus का क्या function है? It is responsible for synthesis of ribosomal RNA, and it is a dark spot. What is chromatin? क्रोमोसोम्स जब सेल डिवीजन के स्टेज में आ जाते हैं, इंटरफेज ऑफ सेल डिवीजन, दे बिकम कंडेंस्ड एंड बिकम मोर थिकर, जहाँ पे वो विजिबल होते हैं, इजीली नज़र आने शुरू हो जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर. तो उस स्टेज पे हम उनको क्रोमेटिन कहते हैं. एंड दिस क्रोमेटिन इज फर्दर कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स. What are ribosomes? Here you can see the structure of ribosomes. They are consist of two subunits, smaller subunit and larger subunit. These are tiny granular structures. They might float in cytoplasm, or they might be attached with endoplasmic reticulum. And what is their composition? They are composed of equal amount of proteins and as well as ribosomal RNA. And major function is they are involved in synthesis of protein. In case of as ribosomes are not bound by membrane, so they are also present in prokaryotes. जाहिर है उनकी भी उनके अंदर भी ये राइबोसोम्स होते हैं क्योंकि उनको भी प्रोटीन्स की नीड होती है, उन्होंने भी लाइफ गुजारनी होती है, तो उनके अंदर भी ये राइबोसोम्स होते हैं. Although they are very small ribosomes present in case of prokaryotes as compared to eukaryotes. Thank you so much for watching my video.